Disclaimer everyone, this video is not meant to hurt anyone or just hurt someone's feeling. किसी को बुरा लगा हो तो I'm really sorry before the watching video only. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ बुरा लग रहा है so just leave this video. This is not meant for you because ये उन लोगों के लिए जो असली में मेरी बात समझना चाहते हैं and I'm really sorry if anyone is offended. मैं बहुत ज़्यादा सच्चाई से बात की है इसमें. मैंने बिना सोचे कुछ कहा नहीं है वैसे ऐसा, लेकिन दे आर पीपल हु मे बी offended by my few words because there is bitter truth in this video. So I'm really sorry if anyone get offended. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Bhumi Mathur, teenager 15 years old, and this is my new video. So is today's video, it's not again any fun challenge or a regular vlog or any fun video because this is sequel of my people need to understand, and I'm gonna talk about something really important. And let's get started. Firstly, I want to thank people to give me 100 subscribers, and actually more than 100. It's like 160 now, and I am really thankful to everyone. I was about to release my 100 video, 100 subscribers video, but I am not able to because recently there are many technical problem in my editing and my editing software going on. I tried, and जो आज मैंने last जो video डाला, the twin telepathy, it was really difficult for me to edit it. I edited it for the 7th time, and then finally it was uploaded perfectly. And I just want you guys to give me the same amount of love you're giving right now, and just thank you so much. That's all what I wanted to say. Anyways, let's start with the today's topic. So first topic I'm gonna put up is people need to understand to take vaccines. Lastly, I talked about to be inside their houses, to take precautions. Actually, it was about the mental health, especially the teenager growth, like me, my sister, and everyone. So I got really positive and a good response to that video. So I thought, why not to make another video like this, and why not to just express myself where I wanted to. So recently I've heard that people aren't taking vaccine because of certain reasons. First reason I see is fraud forwards on WhatsApp or any social media app, maybe on YouTube, maybe on Instagram, Twitter, or anywhere in the world, anywhere in the social media. Maybe people also get that fraud news, they accept it as a real news, and they just spread it around, which is not at all good. So मतलब जो लोग ये फ्रॉड न्यूज़ के चक्कर में आ रहे हैं, फंस रहे हैं, firstly that everywhere on social media there are fake news, but there are as well as the good, the original, and the news you need to know, not the fraud, on YouTube, on Instagram, on Twitter, on Facebook, or any social media app. So firstly, we need to catch those fraud WhatsApp, only WhatsApp forwards, because the most fraud news is being spreaded from WhatsApp. This is what I noticed from my history and from my past, कि जो भी सारी गलत न्यूज़ एंड फ्रॉड न्यूज़ आती है वो सारी व्हाट्सएप से आती है. एक्चुअली व्हाट्सएप से ही नहीं, बट स्टार्ट व्हाट्सएप पे होती है, स्टार्ट और भी जगह होती है, बट सबसे ज़्यादा फॉरवर्डेड एंड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट और सबसे ज़्यादा फैलती व्हाट्सएप पे ही है. Our country, India, has started recovering from COVID, but there are people who are thinking of not taking vaccines because of this fraud news. For example, the fraud news is that
वैक्सीन लेने से I'll just make up a story. वैक्सीन लेने से no, I don't want to make up a story. I'm gonna say what I actually read in a forward, which is कि वैक्सीन लेने से आप लोग और बीमार पड़ रहे हो. And I don't know from where this is coming. I didn't remember the whole thing, like whole message, but I remember a bit. जो था वो वैक्सीन लेने से you are getting infections which you are not supposed to get, or you getting more affected by coronavirus. This is absolutely wrong, guys. Covaxin and Covishield both are working properly in their own ways for COVID virus, and this is really important. We need to understand this. Vaccine is not affecting us like that. No, vaccine are not affecting us like that. बिल्कुल भी नहीं. They are doing their own work in their own ways, perfectly in their own fields. Second fraud news which I have heard in my family circle and my mom dad have told me is that जिन्हें कोरोना वायरस हुआ है वो 6-7 महीने तक, आई डेंट रिमेंबर द टाइम दे टोल्ड मी, बट दे हैव टोल्ड मी दैट 6-7 महीनों तक वैक्सीन नहीं ले सकते आफ्टर रिकवरी फ्रॉम कोविड. दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. बिल्कुल भी गलत है ये, लाइक totally wrong. After 28 days, I guess. Okay, I'm not sure about it. I'm gonna tell you the sure date. Okay, so perfect date to get vaccinated after being recovered from COVID is 25 days. Before, I think it was being said that 3 months. Okay, fine guys, I got this all thing wrong. It is not 25 or 45 days. It is 3 months. But one of our relatives got vaccinated in just 45 days. So 45 to 25 days, like that. I'm really sorry for that. A point which one of my neighbor told me and my family. Actually, they were discussing about vaccination. And उन अंकल ने मुझे हमें ऐसा बोला, मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि हम बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं, बट पेरेंट्स आर गोइंग ऑन देयर जॉब्स. माई डैड इज़ गोइंग ऑन हिज जॉब. सो वो लोग जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे. वी कांट जस्ट गो एंड कैच द वायरस एंड जस्ट कम बैक. And maybe if virus is around us, there are very less possibility for us children to catch that virus. But if the main source of virus is gonna be from outside, which our parents are going regularly on their jobs, so what I want to say is the parent is the main source. अगर वो vaccinated है, so our chances are just a percentage of being in that positive stage of virus just decrease a lot of stages. So yeah, they अभी बच्चों की वैक्सीन्स नहीं आई हैं. 18 बिलो वैक्सीन नहीं आई हैं, इंक्लूडिंग मी. आई एम नॉट वैक्सीनेटेड बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम 15 एंड बिलो 18. सो इसलिए इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू बी वैक्सीनेटेड फॉर children like me, my sister, or anywhere in the world. The second point people are not getting vaccinated is that people are waiting for free vaccines. Free vaccines भी मिल रही है, but paid भी मिल रही है. So I don't know about the amount, but it's starting around like 700, I guess. Yeah, 700. I know this. Starting around 700. But I don't know why people are not getting vaccinated because of free and paid. If you have money, if you have enough money to just get vaccinated for your entire life till the COVID is, come se come you're not gonna die because of COVID. It's for sure. If you're vaccinated, if you're vaccinated, you're not gonna die because of COVID. You have a possibility of just being yourself freely around the world again after this whole year. And it's been more than a year, honestly. So I myself want to be free, just roaming around free without a mask and without any just tension in my mind that will, if I'll touch a thing, I'll get a COVID and maybe of that I'll die.
I know this is a bitter truth, but this is truth. Coronavirus has caused a many death. Okay, I don't know what happened to my English. Coronavirus has caused many deaths. So I really don't know about it कि मैं कैसे कहूँ, but this is the truth. We all are living in this bitter truth right now. No one knows that कौन कब तक है, कौन कब तक नहीं है. Okay, this is a sensitive topic and this is the truth. इसलिए मैंने बोला just get vaccinated. जाओ जाके वैक्सीन्स लगाओ, कुछ भी हो जाए बस वैक्सीन लगाओ. डोंट वेट फॉर फ्री वैक्सीन इफ़ यू हैव मनी. स्टॉप दैट. एक और रीज़न, पीपल वांट महंगी महंगी गाड़ियाँ एंड फ़ोन्स. 20,000 का उन्हें फ़ोन चाहिए बट एक 700 की वैक्सीन नहीं लगा सकते. अगर एक वैक्सीन लगाओगे तो उससे कितना बड़ा फ़ायदा होगा, और अगर एक 20,000 का फ़ोन लोगे तो उससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा. जस्ट थिंक ऑफ इट. अगर छोटा फ़ोन है, बड़ा फ़ोन है, ओके, आई एम नॉट गोइंग डीप इन दैट टॉपिक, बट पीपल इसमें भी मतलब लोग बाग इसलिए इसमें भी कंजूसी दिखा रहे हैं. वो लोग फ्री की वैक्सीन्स लगाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. माई पेरेंट्स, माई सेल्फ गॉट वैक्सीनेटेड, पेड वैक्सीनेटेड. उन्होंने भी पे करके वैक्सीन लगवाई है, एक्सेप्ट माई दादा दादी बिकॉज दे आर सीनियर सिटीजन एंड माई चाची बिकॉज शी इज़ डॉक्टर. उन लोगों के अलावा बाकी मेरे घर में सबको, इट मीन्स 3 people, माई चाचा, माई मॉम एंड माई डैड आर वैक्सीनेटेड but not free. They have both, they 3 of them have been paid for the vaccine. So yeah, I don't know how to say it like this, but मेरे दिल में जा रहा है ना, मैं बस बोलती जा रही हूँ. I am not even thinking that what I'm saying. It is important to be vaccinated. Thirdly, why people are not getting vaccinated is people are waiting for other people to be vaccinated so that they can be vaccinated. Whoa, what did I just said? Okay, what I mean is person A is thinking when person B will be vaccinated, I will be vaccinated. Person B is thinking that when person A will be vaccinated, I will be vaccinated. इस मामले में कोई भी वैक्सीन नहीं हुआ. मैंने सोचा वो वैक्सीन करवाएगा तो मैं कराऊंगी. उसने सोचा मैं वैक्सीन कराऊंगी तो वो कराएगा. And no one is getting vaccinated. This is the point I'm talking about right now. ऐसा क्या पता आप जो सोच रहे हो पूरी दुनिया सोच के बैठी है, और मे भी पूरा इंडिया सोच के बैठा है. इस हिसाब से तो कोई वैक्सीन करा ही नहीं रहा. एंड आई हैव हर्ड द न्यूज़ दैट वैक्सीन की कमी नहीं है. पीपल आर सेइंग वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की कमी है. वैक्सीन की कमी नहीं है, लोग भाग नहीं जा रहे हैं. हॉस्पिटल्स का रोज का टारगेट पूरा हो ही नहीं रहा है. इंडिया में कितने सारे लोग हैं. I mean, people have to think themselves. अब हम पोलियो की ड्रॉप्स की तरह हर घर जाके वैक्सीन थोड़ी लगा सकता है. पता नहीं क्या करते हैं लोग बाग. पीपल से सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है. सरकार को जो करना था वो करके वो रह चुके हैं. अगर कुछ करेगा या कोई भी कुछ करेगा तो वो आप लोग करोगे, मैं करूँगी, मेरे पेरेंट्स और जितने भी इंडिया में वर्ल्ड में लोग हैं वो करेंगे. हर बार सरकार को दोष देना इज़ नॉट गुड, बिकॉज ये मैंने न्यूज़ में देखा है. मेरे मॉम डैड जब खुद वैक्सीन लगाने गए थे, उन्होंने मुझे खुद बताया कि वैक्सीन्स तो बहुत सारी है, बहुत सारी, एंड एवरीथिंग इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. बहुत सारी वैक्सीन है बट लोग बाग नहीं जा रहे ना. People are not going to be vaccinated, and the reason I just told you, few of them, maybe there will be many more. Another thing I want you all to spread is hashtag vaccine करवानी है. I don't know, maybe this hashtag is already there, but I want this hashtag vaccine करवानी है to be spread around everywhere you go. Twitter, Instagram, यूट्यूब, फेसबुक, हर पोस्ट, एक पोस्ट डालो अपनी वैक्सीन कराती फोटो का, हैशटैग वैक्सीन करानी है, एंड जस्ट टैग मी अराउंड एवरीवेयर.
I'm gonna link my social media icons, my social media IDs down below so that you can go and tag me on Twitter and Instagram. So yeah. Another thing, मैंने सुना है ऐसा कि लोग बाग को जोर आ रहा है. I mean, the citizens of India especially have major roles. I don't want to say this, but it is the truth कि लोग बागों को पता है, everyone knows that कि वैक्सीन नहीं कराएंगे तो क्या होगा. बिकॉज जितना सोचते हैं ना अपन कि इंडिया अनएम्प्लॉयड है या गरीबी है, इतना है नहीं इंडिया में. पीपल नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी 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 क्लियरली, हर कोई. एंड आई डोंट नो, बट जो पढ़े लिखे लोग हैं, पीपल हु नोज एवरीथिंग, हु आर रियली इंटेलिजेंट, जो सब जानते हैं, अपनी पोस्ट में अपनी क्वालिफिकेशंस में बहुत हाई है, they even aren't understanding this. This is what I have personally seen and experienced. Me being a teenager, 15 years old, can understand this. Then why can't you? क्यों नहीं कर सकते हो आप लोग? एक छोटी सी सुई तो घुसनी है. सुई से डरने के लिए आप अपनी लाइफ को दाव पे लगा दोगे. Oh my God, this is so shameful. If a person is not going because of an injection, घुसेगा अंदर और वापस निकल जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन बुखार रहेगा और क्या होगा? कम से कम यू हैव बीन सेव फ्रॉम दिस डेडली वायरस. People getting again being affected by this third virus known as Delta Plus. I didn't know about this much, but what I've heard is that coronavirus vaccine is working on this. अगर अभी की वैक्सीन नहीं लगाई ना तो कोरोना वायरस की बजाय ये डेल्टा हमें वापस मारने लग जाएगा. आई माई सेल्फ वॉन्ट टू लिव माई लाइफ अगेन. दिस इज अ ह्यूज रिक्वेस्ट टू everyone watching this. Just go and get vaccinated. Hashtag vaccination करवाना है. Please spread this hashtag and please try to understand this. This is really important topic in today's scenario. That is it for today, guys. Thank you for watching, and yeah, please do subscribe and like, share, my comment on my videos. Thank you so much for loving me like this. Keep loving me like this, and again, thank you so much for 150 plus subscribers. Take care and bye bye. आज का ज्ञान ये है कि मेरी दीदी ने जो ज्ञान दिया है वो ही सबसे बड़ा ज्ञान है. आप